Hello students, today we'll be talking about quadratic spline interpolation. It is the another one in the spline interpolation. Earlier we have done linear spline interpolation where k was equal to 1. Quadratic means where k is equal to 2. So the definition remains the same. The quadratic spline function is a function that consists of a quadratic polynomial piecewise joined together with certain smoothness conditions. So here the only difference between the linear and the quadratic is that here the spline is of degree 2 and the conditions are it passes through the all the points. Second one is on each subinterval it is a polynomial of degree 2 except the first or the last interval. That means either the first one or the last one must be a linear polynomial, both cannot be either of them. The third one is the function and its first derivative must be continuous in the open interval. So in the linear one, we just check the continuity of the function only on the open interval, but in the quadratic, we are checking the continuity of the function as well as its first derivative. So this is how we can write the spline interpolation in the similar way. And this is the graph of for this quadratic spline interpolation. So you can see here the end interpolant, that is the spline interpolant, is linear, while the all the rest are the quadratic ones. They are the polynomial of degree 2. So what's the algorithm to solve the spline interpolation of order degree 2 is in such a cases where you have to find out the quadratic spline function. This is the method that we'll be using. Let the function six be equal to ai x square plus bix plus ci, where I is ranging from 1 to n in the interval xi minus 1 to xi, where ai, bi, ci are 3n unknowns. Now we determine these unknowns using the following conditions. Now these are 3n unknowns, so we must get 3n equations to find out these unknowns. The conditions are: the first one, each quadratic goes through two consecutive points. That means we have these conditions which will give us 2n equations. So let us see what we have. Si xi is equal to f of I for I going from 1 up till n, and si plus 1 xi is equal to f of I for I going from 0 to n minus 1. Now what does this condition states? As you can see in this graph, what we have, the blue line, the blue curve represents S1, the green one represents S2. So we have one thing in common between the blue and the green one, the corner point, वो दोनों में आ रहा है. सो S1 में जब आप स्टार्ट करते हैं तो S1 जो पास कर रहा है वो x0 से भी पास कर रहा है और x1 से पास कर रहा है. Similarly, जो S2 है, that is the green color that you can see here, it is passing from x2 and x3. So उसी कंडीशन को लेने के लिए यहाँ पे हमने दो कंडीशंस है हमारे पास. अगर आप यहाँ पे i को 1 पुट करेंगे तो इट विल गिव यू S1 x1. दैट मीन्स जो S1 आपका जो स्प्लाइन फंक्शन है, इट इज पासिंग थ्रू x1 एंड इट इज गिविंग द वैल्यू f of 1. ऑन द अदर हैंड अगर आप i को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, S1 at x0 is giving you f of 0. दैट मीन्स S1 स्प्लाइन फंक्शन दोनों से पास हो रहा है, x1 से भी x0 पे भी, और जब पास होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो f1 और f0 रिस्पेक्टिवली वैल्यूज देंगे. इसीलिए हमने यहाँ पे दो कंडीशंस हम यूज करेंगे और हमारे पास 2n इक्वेशंस आएंगी. सेकेंड कंडीशन है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस विल गिव अस n minus 1 equations. Now what is this continuity of the first order derivative? Si dash xi is equal to si plus 1 dash of xi, where I is ranging from 1 up till n minus 1. अगर आप यहाँ पे I को 1 पुट करेंगे, so what does this states? S1 dash at x1 is equal to S2 dash at x1. क्योंकि x1 दोनों से पास कर रहा है, S1 और S2 स्प्लाइन फंक्शन से, इसीलिए जो उनका डेरिवेटिव है वो भी x1 उनसे भी पास करेगा. So this will give you n minus 1 equations.
लास्ट कंडीशन जो हमारे पास है, अभी तक हमारे पास 3n-1 इक्वेशंस हो गई हैं. लास्ट वन that we have is either the first spline or the last spline is linear. So यहाँ पे linearity का मतलब ये है कि double derivative of s1 at x0 is 0 which will give you a1 as 0. अगर आप s1x, अगर आप i को 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे double derivative would give you just twice of a1, राइट. सो अगर आप उसको जीरो पुट करेंगे, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग a1 as 0, और double derivative of the last line function at the last point would be 0, so that states that an is 0. So in both the condition, either the first or the last one must be linear. So this is the only one equation, so this totals up with 3n equations, and with all these values, when we put in the spline function, we will get our quadratic spline function. So let us consider one question where we are checking whether it is a quadratic spline function or not. To check it is a quadratic spline or not, जैसे हमने linear के लिए check किया था, उसकी definition के सारे points जब तक cover करेगा तभी वो quadratic spline होगा. So यहाँ पे हमारा जो first point है, it must pass through all the points. Second, on each subinterval it is a quadratic polynomial except the first or the last, जिसमें आपका लीनियर होना चाहिए. थर्ड इज एस एक्स एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल. यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -10, देन 0, 1 एंड 20. सो -10 से 20 का जो ओपन इंटरवल है, वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एंड उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की. सो एज वी कैन सी हियर, द फंक्शन इज पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स, ऑल द नोड्स -10, 0, 1 एंड 20. मोर ओवर, आपका जो S1 एंड S2 है वो क्वाड्रेटिक है, वी कैन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, एंड द लास्ट वन दैट इज S3 is a linear polynomial. So definitely it will be a quadratic spline function if the third point will be checked and if it is correct. Now to check the function is continuous at x is equal to 0, जैसे हमने लीनियर स्प्लाइन में चेक किया था, सिमिलर बेसिस पे आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सो लेट अस सी. The left hand limit will give you 0. The right hand limit will also give you 0. So here, as the left hand and the right hand limit are equal, so we are getting it to be continuous at x is equal to 0. Now to check whether it is continuous at x is equal to 1, again the left hand limit will give us -1, and the right hand limit is also giving us -1. So again the function is continuous at x is equal to 1. Now comes when you have to check whether the derivative is continuous or not. For that, we first have to find out the derivative of the function. So we will be having s1 dash, s2 dash and s3 dash on the different intervals. So I have just written that. So to check the first derivative is continuous at x is equal to 0, आपको वही check करना है that limit x tending to 0 negative s dash x is equal to limit x tending to 0 positive s dash x. So 0 negative पे आपका s1 dash होगा और 0 positive पे s2 dash spline function होगा. So जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में सब्सटीट्यूट करेंगे, यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू 0. सो देयरफॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. सिमिलर है, बस आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उनकी कंटिन्यूटी चेक करना है. अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड ऑन द सिमिलर बेसिस लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -2 आ रहा है, right hand limit भी -2 आ रहा है, as both of them are equal, therefore the first derivative is continuous at x is equal to 1. Since all the conditions are satisfied, therefore our function is a quadratic spline function. अगर इसमें से एक भी condition satisfy नहीं होती, then this will not be a quadratic spline function. So in the next lecture we'll be talking about another question of quadratic spline function. So thank you.